Hello everyone, welcome to EduTap and also welcome to the Success Series session. So NABARD result has recently been out. It is NABARD Grade A 2022 that we are talking about, and we have started with these insights with the toppers so that you all have an idea what the toppers approached, the strategy that they follow to clear the examination. And we have one such good example with us, Mr. Akash Gautam, who has recently cleared NABARD Grade A 2022 in journalist post. We have taken yesterday also, we have taken session for specialists, but we got demand that there should be a proper session for the generalist post, and that is why we have done that, and that too live, so that you can directly ask question from sir, and I guarantee you sir is going to help you a lot in today's session. Just you can ask questions, but first we'll have an interactive session with him, and then afterwards we'll have all your questions answered in that. So Mr. Akash Gautam, first of all, welcome to EduTap, and we have our heartiest congratulations on cracking NABARD Grade A examination. Thank you so much, ma'am. Good evening. Thank you for having me here. Right. So, first of all, I think the audience must want to know about your educational background. So, I want you to tell them what is it, and also about the journey that when you finally decided to clear NABARD, and what was your journey अभी तक की जो भी जर्नी है आपकी. Yeah. मैम मेरा नॉन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है बट मेरा बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है बिकॉज आई कम फ्रॉम द यूपीएससी बैकग्राउंड. All सो right. यस, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर लाइक 8 or 9 years बैक. तो उसके बाद दिस इज द फाइनल वेयर आई एम राइट नाउ. सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. उसके बाद मैंने अपना एमए ज्योग्राफी किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और साथ साथ मेरा पीएचडी चल रहा था क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा सा Right. It takes डाउट हो रहा time, था. some time. इट टेक्स Yeah. टाइम, सो आई थॉट आई शुड गो विद द हायर स्टडीज आल्सो. सो Hmm. मैंने एमए और पीएचडी में भी एनरोल था. And last year I started working in an institute, a renowned institute in the field of UPSC Next IAS. So I was mentoring students there. I was helping the students in writing their आंसर राइटिंग एंड ऑल्सो इन दी इंटरव्यू सेशन. उस टाइम Right. पर नबार्ड का पहली बार आई रोट ट्राई टू कम फॉर दिस एग्जामिनेशन. बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, और इनफैक्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास. तो बहुत लिमिटेड टाइम में ऐसे ही वीडियोस देख के मैंने बेस्ट स्ट्रेटेजीज को ढूंढा जो मेरे को सूट कर सकते थे लिमिटेड टाइम में. और सिंस EduTap इज वन नेम इन दिस NABARD लाइफ एंड ऑल अदर रेगुलेटरी एग्जाम्स, सो मीन्स के टाइम पे मैंने EduTap से कनेक्ट हुआ एंड दे हेल्प मी, एंड दैट्स हाउ आई केम हियर. एंड फाइनल रिजल्ट आया विच वाज रियली प्लीजिंग, क्योंकि बहुत एफर्ट्स के बाद आया था ये. थैंक यू. Right, right. So some of you might freak out understanding his background कि UPSC की इतनी तैयारी की थी, PhD holders है. But I want to tell you one thing. You are just looking at what preparation did he do. लेकिन आप अगर देखिए इनका constant एक जो journey रहा है, you know, because there are lots of ups and downs that he has faced, and still he kept on continuing, and he finally ended up with one of the renowned institution, uh, the regulatory body. So here we have to understand, and this is what today's session is all about. It is not about what background you have, what achievements you have, what failures you have, but having that officer mindset that you can attain कि जितना failure मिला, जितना success मिला, that is a different thing. Until you reach your goal, you are not going to stop, and he is a live example of that. Sir, first we'll start with phase one, and there we have merit and non-merit section. Those Yes, who ma'am. watch my all the videos, they may think that I explain in every session that what is the different phases that are there, but this is for the new aspirants so watching the video for the very first time, and they do not have a general idea that what is the pattern of phase one, phase two. For them it is important to understand that in phase one there are two sections. One is non-merit and one is merit. And merit section, in non-merit you just have to clear the minimum cutoff, while in merit section it will decide that if you will make it to phase two or not. So sir, first we'll quickly talk about phase one non-merit section, in which we have quant, reasoning, English, then we have decision making and computer science. So what was your strategy, and whatever sources that you refer to, please share with the aspirants so that they can also have a proper plan. Yes, ma'am.
मैम जैसा भी आपने बताया कि इसमें मेरिट और नॉन मेरिट सेक्शंस थे। इनफैक्ट अगर इसमें नॉन मेरिट नहीं होता, जैसे क्वांट, इंग्लिश लैंग्वेज, जो एसएससी के कैंडिडेट्स और बैंकिंग एग्जाम्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका बहुत स्ट्रांग होता है। ट्रू। तो शायद मैं एग्जाम ही नहीं लिखता। मैंने एग्जाम इसलिए लिखा क्योंकि ये मेरे जो गुड एरियाज थे, विच इज लाइक ईएसआई, एआरडी। दो एआरडी मैंने नहीं पढ़ा, बट आई न्यू कि दीज कैन बी प्रिपेयर्ड। तो मेरे पास शायद बहुत कम टाइम था, तो मैं बहुत अच्छे से मैंने स्ट्रेटेजाइज किया कि आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम इन नॉन मेरिट सेक्शन, बिकॉज आई न्यू कि आई कैन नॉट स्कोर वेरी हाई इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। इंग्लिश आई कैन डू बेटर, बट क्वांट, रीजनिंग, इवन कंप्यूटर नॉलेज, सो आई न्यू कि मेरे को बहुत कम टाइम देना है इनकी प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट मैंने टाइम नहीं भी दिया था, इफ आई विल बी ट्रू, क्योंकि मेरे को पता था क्वालिफाई मैं कर लूंगा, बट मेरे को जो टाइम देना था वो मेरिट सेक्शन में देना था। तो मेरिट में है जनरल अवेयरनेस, True. which is for 20 marks, Hmm. ESI, which is economic and social issues, 40 marks, and ARD, which is 40 marks. So general awareness, though I come from UPSC background, but the knowledge, but the type of questions which are asked in such exams is completely different. यहाँ बहुत factual questions होते हैं general awareness के, जो particularly 2 या 3 months के आते हैं exam से पहले. So I cracked this by looking at the previous year questions कि कितने months का मेरे को पढ़ना है. तो पेपर एग्जाम की डेट जो थी, that was, ma'am, it was in August or September? Around September, yeah. Okay, yes ma'am. So मैंने ऑलमोस्ट जून जुलाई में 3-4 महीने का ही सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा था, दो सब लोग सजेस्ट करते हैं 7-8 महीने का। इनफैक्ट मेरे को बहुत ही प्रिसाइज प्रिपरेशन करनी थी, तो आई टुक द रिस्क, आई प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 3 months, बट वेरी थरो। Right. 2 और 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के वन लाइनर्स उठा के मैंने उनको बार बार पढ़ा। आई यूज टू टेक स्क्रीनशॉट और उनको बार बार देखता था। इनफैक्ट एग्जाम में जाने से पहले भी मैं वही कर रहा था। तो जनरल अवेयरनेस को मैंने ऐसे किया था। ईएसआई के लिए सिमिलरली आई मेड नोट्स फ्रॉम पीआईबी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस जो पहले आते थे, Alright. पहले जो आ चुके हैं एग्जाम्स में। Type मेरा of जो the type of questions that were there, right? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर द गाइडिंग लाइट फॉर मी। सिमिलरली एआरडी मेरा बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था, बट मैंने देखा कि जैसे क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जांपल ओरेली कल्चर और डिफरेंट कल्चर्स किससे रिलेटेड हैं। Yes, terminologies आई that मेड अ are there. लिस्ट। हाँ, सो आई पिक्ड आउट द क्वेश्चंस जो मेरे बहुत अच्छे होने वाले हैं, एंड आई रिमेम्बर दो क्वेश्चन मार्क्स मिलते नहीं है, सो इफ यू अलाउ मी आई कुड शेयर द मार्क्स जो मैंने आपके बाद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ लगाए थे। Sure. So in ARD, which was my weakest section, but in my batch, it was the easiest. I was in the afternoon phase. So there were 40 questions, out of which I attempted 34 questions, जिसमें से 29 मेरा करेक्ट था। और जनरल अवेयरनेस में मेरा 11 सही था आउट ऑफ 20, एंड ESI was very tough for me. ESI though is my good part, but हमारा वो जो सेक्शन था उसमें बहुत टफ आया था ESI. So I did only 19 correct. Attempted only 24 out of 40 questions. So cut-offs बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं. So I was getting around 54 marks. I'm not sure if the cut-off is out, but 54 marks I was in the list for the mains qualification. Right. So for ARD, you have said that you did not prepare much of it, but still you were able to score a decent marks in the section. And we know that ARD and ESI both, they come of total marks 40-40, and they play a major role for making it to the second section. So there should be something, because in ARD section, static is the portion that comes more than the current affair. When we talk about ARD and ESI, it is completely opposite. That current affair, it comes more in ESI than the static part. So sir, in ARD, you have said that you learned about the terminologies that are there, olericulture, floriculture, etc. These are the terminologies that are used in ARD. But apart from that, did you refer to any notes or any revision session? Did you watch those or did something so that you were able to attempt, as you did not have any agriculture background? Yes, ma'am. Ma'am, there are videos of you on YouTube also. So in the first phase, I watched your videos and I had the EduTap files, PDF, which were available. So I looked out the topics such as wilting point. मैम मेरे को नहीं पता सच में क्या होता है, लेकिन मेरे को एग्जाम के टाइम पे पता था wilting point क्या होता है, saturation, maximum. These are my notes. मैंने if I can show them here.
Yeah, Is it it's available? getting Okay, it's getting a little bit okay, blur. okay. It's getting Yeah, blurred. yeah. So field capacity. So I made एक या दो पेज का पूरा ऐसे करके नोट्स बनाया था. Horizons का नोट्स बनाया था. Podalization, lateralization. Hmm. तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए थे जिससे जो डायरेक्टली मेरे को हेल्प करे क्वेश्चन के लिए. So And I that was also just an example और right. O'Leary culture वाला. But I Yeah. was saying कि ऐसे सारे टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में आते हैं. In fact, in your videos you tell those 5 or 6 topics which I have written here, जिनके Yeah. ऊपर मैंने ज्यादा मेहनत किया था, and I And left other things out. that is also what I was going to share with the audience, that sir ने अभी जो notes दिखाए हैं, these belong to soil and water conservation, and from this chapter only maximum questions are asked. So as sir has said during while he was explaining, that PYQs play a major role. So if you have properly thoroughly analyzed previous year questions, half of your work is done, because then you know that how much you need to study. Because if you're going to go in the market, there's a lot of resources that you free sources that are available, but if you don't know how to segregate what is important for examination and what is not, you are going to face a lot of difficulties. So what sir did, he just analyzed previous year questions. He just wrote down whatever the notes that he wanted to form, and in current affairs there's one key takeaway that sir has given, that even if you are from UPSC background, it doesn't mean that if you're preparing current affairs for that, it is going to help you in NABARD, because in regulatory bodies, a lot of data are asked, which is not asked in UPSC, or even if asked in very less number. So this is a key takeaway even for the UPSC aspirants who are preparing and now want to appear in NABARD. So this is, you have told about ARD and current Ma'am, I affair. want to add two things here Yes, for sir. ARD. Yes. Uh, Ma'am, one was common sense is very important while sitting for the examination, True. and it makes a lot of difference there. So this is one thing which I learned in UPSC, that a question is never tough. It is the options which makes it tough. So अगर आपने question नहीं भी सुना है, still you can attempt the question and get the answer right. So Hmm. जैसे मुझे नहीं पता था कि बफलो का जो काफ होता है, हाफर बोलते हैं मैम, शायद आपको आइडिया होगा. सो Yeah. व्हाट इज दैट टर्म? बट Hmm. मैंने जब ऑप्शंस को देखा तो वहाँ ऑप्शंस इस तरीके से थे, एक हाफर था, एक हाफर काफ था, और बाकी 3 ऑप्शंस अलग ब्रीड के थे. Hmm. आई वॉज कंफ्यूज. सो मैंने, लग रहा था हाफर काफ होगा. तो ऐसे करके ड्रिप इरिगेशन का जैसे मैंने नहीं पढ़ा था, दो Hmm. मैंने पढ़ा था, बट जो पूरा स्टेटमेंट आया था उससे आप खुद एनालाइज करके आंसर पे आ जाते. तो हमारे सेक्शन में मैम एआरडी में ऐसा हुआ था कि आपके पास अगर कॉमन सेंस को भी यूज करेंगे तो यू कैन अराइव टू द क्वेश्चंस इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड दैट पार्ट. Hmm. Hmm. तो बहुत ही थोड़ा मैंने मेहनत किया था, इसलिए मेरे को मेंस में वहाँ प्रॉब्लम हुआ था, बट प्रीलिम्स निकालने के लिए मेरे को बहुत इजी हो गया था. आपके Right. नोट्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना, और बाकी जो अभी तक आपने मैम जनरलाइज किया है. Right, right. So if you are if you are starting a preparation now, I would not suggest you to leave one subject. But yes, as हम्म. sir has prepared after the notification, so he had a lesser time. So if you are watching this video at that moment, that examination is near, at that time, if you want to take risk, you can take that. You can master yourself in one or two subjects, and then you can have a little bit idea in one. For example, sir had little bit idea in ARD, but then in ESI and current affairs he gave his best. So sir, non-merit section, as you have said that you did not मैम, give. having said that, I scored highest in ARD. Yeah, that's what cause हाँ मैम, मैंने एक्चुअली that's what the किया सब कुछ irony था. is. हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि मैंने मेजर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए थे. जैसे फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आ गया था और मेरे Hmm. को रटा था कि 46% होता है अमोनियम उसमें, एंड दीज आर द Right, नंबर्स देयर. तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था. सो दो कम टाइम में किया था, बट इट हेल्प मी अ लॉट. right. So for non-merit, as you have said that you did not give हम्म. much attention to it because हम्म. they were just qualifying in nature, but हम्म. still, sir, you had to do some practice before हम्म. examination. So sir, did you follow mock test or you just went through the previous year paper? सॉरी मैम, इन दिस रिगार्ड आई गेस जिन बच्चों का ये थोड़ा वीक है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए. Hmm. लेकिन जिनका थोड़ा स्ट्रांग है, बिकॉज सीसैट और बाकी एग्जाम्स भी होते हैं आप Right. जब दे रहे होते हो, सो आई वुड से यू कैन इग्नोर इट. मतलब दैट इज अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट नॉट Hmm. एवरीवन कैन इग्नोर इट. बट कुछ लोग कर सकते हैं. इनफैक्ट इन दी पेपर मैम आई वाज एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस क्योंकि देयर वाज अ कंपोजिट टाइम.
So I left out many questions so that I could focus more on the general awareness, eco and ARD. जो direct questions होते हैं, but मैंने जैसे बोला I was using the common sense, तो मैं वहाँ Right. time use कर रहा था in ARD and ESI और अपना maths वाले time को बचाया था. I did not attempt many questions. मेरे को था cut offs इतना रहता है, so almost 50-60% पर ही मैं फिर section change कर दिया था. राइट सर. सर डिसीजन मेकिंग के लिए डिड यू स्टडी और वो भी आपने यू जस्ट No, यूज्ड योर लॉजिक्स? no, मैम सिर्फ लॉजिक ही था. इनफैक्ट आई वाज नॉट श्योर कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे वहां पर, बट आई कैन से कि थोड़ा सा आई एम गुड इन दिस पार्ट, सो बट नॉट वेरी गुड. अगर ये सेक्शनल क्वालिफाइंग नहीं होता, अगर ये मेरिट में होता तो आई वुड हैव बीन आउट. दैट इज फॉर श्योर. Right. So, sir, decision making, as it's a new subject that has been introduced, but you used your common sense and logic. But if you want to suggest to the aspirants, for example, to the ones who would also want to just go and attempt questions in the examination only, so if they have that gut feeling that this should be the answer, so they shall they take the risk to attempt all the 10 questions, or they should just attempt only to clear the minimum cutoff, which is quite lesser, 1 or 2 in number? यस मैम. जैसे आपने बोला कि आपको गट आ रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये आंसर हो सकता है. एक्चुअली इन सच सेक्शंस, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दिस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देयर इज नो राइट आंसर बट देयर आर 4 रॉन्ग आंसर्स आउट ऑफ 5. Right. तो आपको वो 5 रॉन्ग, मैं देखता था कि ये नहीं हो सकता, दिस इज ऑपोजिट, सो आई वुड गो Right. विद द राइट. So you आई use डिड the नॉट अटेम्प्ट elimination many. method. Yes ma'am. I don't know the terms, हाँ, but Yeah. that sounds correct for that. Right. So you just kept on eliminating the options that it can't be this because it does not seem like this, and then you just Yes. went to the right answer. So Yes. this is how you can actually attempt questions in examination, and this can be applied for anyone. That if you're stuck with a particular question, for example, in agriculture only, you are stuck with a particular question. You don't know if you read the question. So just go through the option once. It can happen that you can eliminate some statements are so absurd that you can easily eliminate them, and you can read to a certain conclusion. So sir, this you have explained phase 1, how did you prepare for it. Now so let's coming to phase 2. So when in phase 1, as you said, ARD you had not prepared that much, although you had some preparation. So sir, did you focus on phase 2 in ARD, or Yes ma'am. and how? Yes ma'am. Ma'am, for phase 2, I knew things are not going to be easy, क्योंकि जो इसमें ऑब्जेक्टिव भी आना था और डिस्क्रिप्टिव भी था. Yeah. और इसमें इस बार कुछ भी सेक्शनल नहीं है, सब कुछ मेरिट का गेम है. आप जितना मार्क्स लेके आओगे उतना ज्यादा अच्छा होने वाला है. सो आई टुक द EduTap मेंस कोर्स. सो दैट कोर्स हेल्प मी. उसमें मैम जो डिवीजन था, इनफैक्ट आई कम फ्रॉम एन एजुकेशन इंडस्ट्री ओनली, बट द type of interface that EduTap provides, how the videos are sorted, how each topic is given. There is a video, then there is a PDF, and there is one more tab there. Quiz. So yeah, quiz. So it was so easy, entertaining, and in fact EduTap को पता था कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही हमें पढ़ाने हैं. हाँ, तो उस टाइम, और इनफैक्ट रिजल्ट और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है, एंड आई वाज वर्किंग, सो आई कुड नॉट डिवोट a lot of time. True. So there were two things. One was collecting the content, and the other was writing practice. Somehow I realized कि writing practice बहुत important होता है. How you present the answer. हम लोग practice करते हैं पेपर पे, but वहाँ पर typing test होने वाला था. तो somehow जैसे मैं आज ये वीडियो देख रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत वीडियोस देखे जिसमें मुझे पता चला कि typing on the laptop is very different from typing in the center. So I got a very bad purana sa keyboard from a friend. So and I took the course जिसमें test थे, and I used to take those tests very seriously. ऑफिस में पढ़ाई और कंटेंट तैयार करने के बाद मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता था उस कीबोर्ड से विद इन द टाइम, और आई मेड आउट हाउ टू मेक श्योर कि मेरे जो आंसर्स हैं दे शुड स्टैंड आउट फ्रॉम दी अदर पीपल. तो वो टेक्निक्स भी आप लोग बताते हैं, बट आई डोंट नो एवरीवन एग्जीक्यूट्स और नॉट. कि इनफैक्ट मैंने अभी काफी लोगों से बात किया जो अभी सेलेक्ट भी हुए हैं, अभी हम मेडिकल के लिए मिले थे. तो एक्चुअली आई वाज गेटिंग वेरी लेस in the objective section. I want to clarify to the students
that in phase 2 there are objective as well as descriptive type questions. So both carries 50 marks. So in the first section, which is objective, out of 50 I was getting a very less score, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं शॉर्टकट्स अपना रहा था प्रीलिम्स में, तो वो शॉर्टकट्स आपको मेंस में बहुत भारी पड़ सकते हैं. सो आई वाज गेटिंग ओनली 26 मार्क्स, 25 to 26 मार्क्स इन दी फेज इन दी ऑब्जेक्टिव टाइप, विच इज अ वेरी लो स्कोर, क्योंकि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं प्रिपेयर कर रहा था, दे वर गेटिंग 38 और 39 मार्क्स. तो इनफैक्ट एट दैट टाइम आई लॉस्ट ऑल दी होप कि शायद इतने कम मार्क्स के बाद तो आई कैन नॉट मेक टू द फाइनल लिस्ट. इनफैक्ट माय फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग यस्टरडे कि मैंने पूरा होप ही खो दिया था. तो बट माय डिस्क्रिप्टिव वाज, आई कैन से, माय स्ट्रेंथ. सो मैंने डिस्क्रिप्टिव को बहुत अच्छे से कर रहा था, तो मैं प्रैक्टिस करता था जाके, बोल्ड से अपनी हेडिंग्स बनाता था. आई यूज्ड टू गिव अ इंट्रोडक्शन व्हिच वाज फुल ऑफ फैक्ट्स, और उसके अंदर नंबर्स होते थे. फिर उसके बाद जिसको मैम जो है रितिका मैम, वो बताती हैं तड़का लगाना होता है आंसर में फैक्ट्स को डाल के, तो वो मैं नंबर्स डालता था. उसके बाद एक हेडिंग डालता था जो मैं बोल्ड में लिखता था, क्योंकि द इंटरफेस इज सच, अनलाइक दी वर्ड पैड, आप वहां पर ज्यादा चीजें नहीं कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल होता है, समथिंग सिमिलर टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. एडुटैप का भी जो प्लेटफॉर्म है वो वैसा ही प्रोवाइड कराता है. और मैंने अपना स्पेल चेक बंद कर रखा था, स्पेल चेक और ग्रामर चेक सब कुछ बंद कर रखा था, क्योंकि ऑफिस में हमें आदत होती है इस सबको यूज करने की. तो मैं बिल्कुल एग्जाम सेटिंग में जाके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करता था. और आप लोगों ने बताया था कि कैसे उस टाइम को डिवाइड करना है. पहले आंसर को फॉर्म करो, 2 मिनट में सोचो, फिर उसको लिखो, एंड देन वी शुड हैव गुड टाइम टू रिव्यू द आंसर, जिससे कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये सब हटा सके. कॉज आई वॉज नॉट श्योर कि इट इज द कंप्यूटर विच विल चेक द आंसर और ह्यूमन, या दोनों का मिक्स है. तो इसलिए इन सब चीजों पे मैंने ध्यान दिया था कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका. कंटेंट के बारे में मैं श्योर था कि कंटेंट जो भी होगा बहुत अच्छा तो नहीं हो पाएगा, बट कॉज आई हैव सम बैकग्राउंड तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ. इसलिए फिर मैंने इसको डिवाइड किया ESI एंड ARD में. ARD वाज, मेरे को लगा टफ होगा मेरे लिए, तो मैंने फिर आपके लेक्चर जो 15 अगस्त के बाद आपने एक सीरीज स्टार्ट की थी पर्टिकुलरली फॉर द मेन, और उसमें बहुत जल्दी जल्दी बहुत शॉर्ट में पीडीएफ के थ्रू बताते थे. मैंने उन पीडीएफ का, और उसमें पूरा आपका क्वेश्चन आंसर्स भी थे. देयर वाज अ फाइल, सो आई गॉट द प्रिंट आउट ऑफ दोज फाइल्स. प्रिंट आउट लेने के बाद मार्क कर करके बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं जितना पढ़ सकता था, क्योंकि टाइम बहुत कम था. देयर वाज ओनली 25 डेज. तो उस कम टाइम में लिमिटेड चीजों को मैंने पढ़ा था, बट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू मेंशन. तो मेरा जो पूरा जर्नी ऐसा रहा है कि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा था, और बैकग्राउंड भी नहीं था. Right. So as you said that you added more and more data points in your answers. So from that, I want to ask two questions, because most of the aspirants, they have this doubt in their mind. First of all, how to learn or retain this data? So, but I'll ask second question simultaneously, because I know the answer, it's somewhere it will coincide. Second is that when you were preparing for the examination, of course, as you bought our course, so we had some sample questions also available, but we have to prepare some content for examination. So on what basis did you selected the topics that, okay, in ARD, I should prepare my descriptive in such a way, and I should collect this type of data so that it is going to help me in examination? So here also, ma'am, EduTap helped me a lot. I have the list here which I made. So in one of your video, you marked out the 6 topics of ARD: animal husbandry and poultry, soil and water conservation, irrigation, plantation horticulture, basis of agriculture, agronomy, agri-engineering, and fisheries. So मैम मैंने ये क्योंकि अब आप टीचर्स बता रहे थे, तो मेरे को ये रिस्क लेना था, टाइम भी कम था. तो इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपके वो वीडियोस पूरे देखे थे, उनके पूरे नोट्स बनाए थे. इनफैक्ट वो वीडियोस मैम काफी कॉम्प्रिहेंसिव, आई थिंक, मतलब आप उसको शॉर्ट वीडियोस, मतलब वैसे मैराथन या जो भी सीरीज बोलते हैं, बट वो बहुत अच्छे थे. दे वर कॉम्प्रिहेंसिव इन इटसेल्फ, मतलब यू कुड फ्रेम अ आंसर फ्रॉम दोस पॉइंट्स. एंड टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, जब हम इस चीज पे काम कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रटने की चीजें बहुत कम रह जाती हैं. और जब रटने की चीजें कम रहेंगी तो हम उनको लंबा रट सकते हैं. अपने नोट्स के आगे मेरे फ्रंट पेज पे हमेशा फैक्ट्स के लिए डेडिकेटेड रहता है.
फैक्ट्स को जो भी नंबर्स होते हैं, अगर आपको वो अलग से दिख रहे हो, वो मार्क्ड हो, तो कॉज कैमरा सेटिंग इज सच दैट आई कैन नॉट शेयर द नोट्स हियर। अदरवाइज आई वुड हैव शोन कि कैसे मैंने हर आपके पूरा प्रिंट आउट्स निकाले हुए हैं मैगजीन्स के, जो मैंने वहां से लिए थे, करंट अफेयर्स के, ESI ARD के क्वेश्चंस के, उनके सारे फैक्ट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीडियोस और बाकी पूरे फॉर्डर मटेरियल से आ जाती थी। राइट। एंड सर इवन दो करंट अफेयर्स अगर ये नाम दे तो ये फेज 2 में नहीं होता है, बट स्टिल इन ESI वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्कीम्स रिपोर्ट्स. सो यस सर मैम। फॉर दैट व्हाट वाज योर प्लान, दैट हाउ डिड यू फॉलो, एंड इन आल्सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड यू फॉलो दैट? यस मैम। मैम, सी समहाउ आप अगर प्रीवियस ये क्वेश्चंस को देखेंगे तो समझ में आता है कि किस टाइप की स्कीम वो पूछ सकते हैं। एंड इस बार जो क्वेश्चन पूछा था, मत्स्य संपदा But से पूछा था, हाँ, इफ आई एम नॉट director रॉन्ग। descriptive, and that can be a googly for students because they can answer these schemes question, but if a whole descriptive answer has to be written, so it becomes, I think, kind of challenging. बट समहाउ आई हैड मेड नोट्स ऑन दैट। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैम, आपको एनालाइज करना है इस पूरे पेपर को, कि आप कितना अच्छा एनालाइज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो। Hmm. तो दैट स्कीम हैड कंप्लीटेड 2 years, सो इट Hmm. वाज इन दी PIB, बहुत इंपॉर्टेंट वो था। हाँ, तो इनफैक्ट मेरे को सारे ही नंबर्स याद थे उस स्कीम के, जब मैं एग्जाम लिख रहा था। इनफैक्ट Good. आई वाज सरप्राइज कि मेरे को ये नंबर्स याद हैं। So I attempted that question, though it was, I'm not sure if it was in the optional part or the compulsory part, but I attempted that question really well, because I remembered the numbers. That was a scheme which was on my priority list. अगर हम इस पेपर को एनालाइज करेंगे तो मैम समझ में आता है कि कुछ स्कीम्स हैं जो बहुत हाई प्रायोरिटी पे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, और LPG उज्ज्वला स्कीम हो गई। तो ये क्वेश्चंस रिकरिंग थीम्स है प्रीलिम्स और मेंस में। तो इन स्कीम्स को ज्यादा फोकस दिया था और फिर वही टकरा गया था। इनफैक्ट क्योंकि ये एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव, आई थिंक दिस वाज द सेकंड और द थर्ड टाइम इट इज हैपनिंग। अर्लियर इट वाज कंप्लीटली Yeah, ऑब्जेक्टिव इन द सेकंड right, राउंड। right. तो पीछे का हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, बट समहाउ जो जिस लाइन पे पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे, जैसे एक एग्रो फॉरेस्ट्री पे पूछा था, तो उस थीम पे मैंने बहुत ध्यान दिया था। So I identified the themes and worked on the themes. Right. So, as you have mentioned a list the source that you have referred from where Hmm. you got 5 to 6 topic of static part, but you have done whatever be the current affairs that are related to those also, then you also you did that comprehensively, so Yes, that ma'am. even if, and that favored your luck that the questions were exactly on that basis only, and because that is the true strategy. There are some Hmm. favorite topics of NABARD from which they can Hmm. either ask current or static. You can study the whole syllabus if you have time, but if you have time constraint, you should be very specific and stick to what is best at that moment, and that was that what you did. So that was for the paper 2, in which we have ESI and this part. But sir, Ma'am, I would yes, like to show the notes now. I think it is possible. yes sir, These are all yeah, the it's facts that feasible. I used to write on the front page. So saying कि luck favor कर गया वो भी सही नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनका बहुत अच्छा नहीं आता था। और इतने कम ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, 4 और 6, फोर, आई गेस 4 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी एक बहुत टफ क्वेश्चन आया था, तो उस फेज में भी आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होता है कि कोई टफ क्वेश्चन होता है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं, अच्छी हेडिंग डाल के और कुछ कीवर्ड्स लिख के। Right. Even if you don't know that answer exactly, you can just frame something around it. And यस only in मैम। the case if you don't know. यस मैम। यस So, मैम। few moments before also you were showing some other notes. That time it was blurry, so you can even share that also if you would like. यस मैम। यस मैम। मैम, जैसे जनरली क्वेश्चन, जैसे मेरे को याद है कि ये क्वेश्चन मैं करके आया था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, मिलियन टन, मेट्रिक टन। तो जब मैं एनालिसिस वीडियो देख रहा था तो टीचर्स बोल रहे थे कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है।
बट मेरे लिए इट वाज वेरी इजी, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो हर साल आता है एग्रीकल्चरल सेंसस, जो एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, सॉरी, हम्म। उसके। तो आई हैड मेड, ये पूरा पीआईबी से ही शायद मैंने लिया होगा। तो हाँ। आई हैड रिटन ऑल दी नंबर्स, फूड ग्रेन कितना है ना। सिमिलरली एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो आप उसको नहीं बोल सकते हो कि अगर आपको वीट का या पैडी का एमएसपी नहीं पता है तो इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन। टीचर्स हम्म। बोल देते हैं कि बेटा इट्स टफ, डोंट वरी, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप एमएसपी 22-23 क्रॉप का है और राइस पैडी का तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। ट्रू। बस इजी ये होता है कि आपका किस फेज में एग्जाम हो रहा है, उससे जस्ट पहले कौन सा डेटा आया हुआ है डेटा एमएसपी का। है। राइट राइट। तो तो दोस्त उस हु डेटा डोंट। को मैंने किया था। तो ये मैं आपको, जो आप बोल रहे थे पहले क्या बनाया था, हाँ तो आई जी। वाज शोइंग यू दीज थिंग्स। हाँ। एंड जब तक सर दिखा रहे हैं तो एडवांस एस्टिमेट्स हम्म। दीज आर आल्सो रिलीज्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो अगेन सर, बिकॉज सर हैज एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो ही हैड एन आइडिया कि एडवांस एस्टिमेट से क्वेश्चन आते हैं, एमएसपी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जानने के बाद भी इफ यू आर जस्ट गोइंग टू एग्जामिनेशन, यू कांट से दैट दीज आर टफ क्वेश्चंस एंड डोंट नो फ्रॉम वेयर एग्जामिनर हैज मेड इट, बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। यू कैन नॉट से कि दे हैव आस्क्ड अ नंबर, इट इज अ टफ क्वेश्चन। ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस ही ऐसा है नंबर्स का। नंबर्स का पेपर नहीं देना है तो यूपीएससी की तैयारी करो, बट वो टफ है। That's true. So, sir, that was for paper two that we have talked about. And sir, schemes जैसे आपने बताया कि आपने रेस्ट्रिक्टेड की थी या आपने मंथ्स करी थी कि इतना मंथ्स के जितनी स्कीम है उतना मैं कवर करूंगा? मैंने मिनिस्ट्री वाइज की थी। अभी वही डॉक्यूमेंट है मेरे सामने। जैसे हम्म। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है मैम, आपको ये ओके। इन्वर्टेड दिख रहा है या सही दिख रहा नो है? नो नो, क्लियर, सीधा। क्लियर है, ओके। हम्म। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए सी आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 11-12 स्कीम्स। एंड ओके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए देर आर 7-8 मोर मेन स्कीम्स। स्कीम्स। तो हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, और फिर आप उसमें फिर जो भी रीसेंट डेटा होगा आप उसमें वो वो ऐड सारा उनका करते मैं थे। डेटा लिख एंड देता हूँ। हाउ डिड यू गेट दैट रीसेंट डेटा? डिड यू रेफर टू एनी करंट अफेयर मैम सोर्स या पीआईबी, आपने कैसे? पीआईबी, ओके। पीआईबी इज दी बेस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। रीसेंट डेटा भी और उसका स्टैटिक पार्ट भी। ट्रू। सर, इसमें पीआईबी में एक चीज पूछना चाहूंगी, बिकॉज इट हैपेंस हम्म। दैट इन अ डे देयर आर समटाइम्स 50 to 60 links also. हम्म। So how did you, Yes. if some aspirants who do not want to buy any course, they just want, हम्म। they want to do self study, for हम्म। them this one question that I want to ask, that how did you हम्म। segregate that in these 56 links these are most हम्म। important, or did you cover all? नो, आई वाज नॉट लुकिंग एट द लिंक्स डेट वाइज, जो गलत है। Okay. हाँ, इनफैक्ट मैंने भी कोई कोर्स मैम इसका नहीं लिया था। तो Hmm. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके मिनिस्ट्रीज को एनालाइज किया पहले, किस मिनिस्ट्रीज को फोकस करते हैं। Hmm. फिर उसके बाद स्कीम्स वाइज मैंने देखा। जैसे नेशनल Okay. हेल्थ मिशन है विच वाज इन 2005, तो उसके Hmm. बारे में जो भी रिसेंट आर्टिकल आया Hmm. ना, इनफैक्ट उज्ज्वला योजना में जो भी अगर कोई चेंज हुआ है, मैंने लिखा उज्ज्वला योजना पीआईबी। तो जो Hmm. रिसेंट आर्टिकल होगा उसमें से डेटा वो लेके सभी आई यूज आ टू राइट जाएंगे देम इन पहले। द नोट। यस मैम। ओके। तो सो दिस रोज के 60 आर्टिकल पढ़ना वो तो पॉसिबल नहीं है मैम। पॉसिबल भी नहीं है और फ्रूटफुल भी हम्म। नहीं है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जी जी। राइट। सो व्हाट यू डिड कि सभी मिनिस्ट्री के फ्लैगशिप स्कीम्स यू हैव टेकन, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट सर्च दैट व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट इन यस इट। मैम। एंड सर, इफ यू टॉक अबाउट रिपोर्ट्स, मैम विच रिपोर्ट्स? some kind of reports जो recently अगर न्यूज में है, they also come in examination. So for that, did you have any, or you just, you मैम, thought that these are lesser in number, so मैम it's जैसे okay? एग्रीकल्चरल रिपोर्ट हो गई, तो Hmm. कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब Hmm. एग्रीकल्चरल रिपोर्ट जितना भी आने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm. तो जो We रिपोर्ट्स have, डायरेक्टली and सिलेबस से रिलेटेड है उनको right. लिखा था। Hmm. और अगर कोई रिपोर्ट करंट अफेयर्स का पार्ट है विच इज Hmm. जस्ट इन न्यूज बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, सो इट कुड बी आस्क्ड Right. इन द फर्स्ट राउंड। तो मैम Hmm. उनको किया था। जैसे एग्रीकल्चरल सेंसस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Hmm. दो आई Hmm. डोंट रिमेम्बर क्वेश्चन आया था या नहीं। स्टेटस ऑफ एक फॉरेस्ट क्वेश्चन रिपोर्ट। हमेशा आता है। ओके हाँ। ओके। तो मैम जैसे एग्रीकल्चरल, आप रिपोर्ट शायद इन्हीं का पूछ रहे थे मैम। हाँ। हाँ जी। हम्म। तो दिस इज द एग्रीकल्चरल सेंसस। हम्म। इसमें कितने स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स कैसे हैं वो राइट। सब, ये हम्म। सब। हम्म। then one page only, then Indian status of forest report one page, then तो सर, ये NABARD रिपोर्ट्स फिर का भी आपने एक वन रिपोर्ट पेज, आता है मैम। तो ये रिपोर्ट सर आपने खुद इसको कट शॉर्ट करा या आपने हाइलाइट्स, यू सर्च फॉर हाइलाइट्स? दिस इज समथिंग विच आई नीड टू आस्क फ्रॉम माय फ्रेंड, क्योंकि ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे फ्रेंड ने तैयार किया था। ऑल राइट, ऑल हाँ, राइट, तो सो वी इट वाज हैड अ, डिवाइडेड, वी हैव डिवाइडेड सम वर्क। हाँ।
Okay. And that's also a big thing. When you Hmm. prepare with your friends, you can actually divide your work, and fruits everyone will Yes, get. ma'am. And then the other type of reports जो आप बोल रहे थे, indices and Hmm. reports, इंडिया की Yeah. क्या रैंक है, कौन पब्लिश करता है, तो वो Hmm. एक ही पेज पे सारी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है उनके बारे में फैक्ट्स, पूरा कंप्लीट डिटेल्स, Hmm. जो बाकी रिपोर्ट्स कभी आ जाती हैं, हु प्रिपेयर्ड इट, इंडिया का क्या रैंक है, उसके बारे में Hmm. मैम एक एक लाइन में मैंने किया हुआ था। Right. जैसे Uh, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मैम, यू वुड नो, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी वाइज, ब्रीड वाइज इनका पूरा रिपोर्ट आता है। livestock तो ये, census. Yeah. yes ma'am, This is livestock livestock census. census, this was Hmm. also important. And final estimates of area and production of horticultural crop. So Reports these were of few of the reports. NABARD, handloom census we Yes have ma'am. microfinance reports. These are some of the reports which are very important. So sir did a group study and they had divided the notes. But what the fact that we want to we should grab it here is that you should have a very precise content. Keep your content. See, if you have content, you can keep on revising it and you can attempt the question. So that is the different thing. And here, sir, first of all, you have gotten a lot of congratulations from the students who are currently watching the live session. And Thank you. Shreyanshi is asking, Hmm. have you prepared from EduTap? So sir has said that for phase 2 he had prepared for EduTap. uh, Ma'am, even for phase one, I use some of the what do you call them? The YouTube. PDFs which you had, ma'am, the PDFs and the YouTube. So these are my notes for the phase one. This is from your material only. उसको मैंने short कर दिया है पूरा. Right, So right. introduction to agriculture. These are all the important files which we get online. Hmm. Right. So, so this now in phase 2 we have talked about paper 2, which is most dreading and important. So, but we have paper 1 also in phase 2, which is of English. So in English we have Pressy writing, we have essay writing. So, sir, what how did you prepare for it? And also, could you please share what kind of questions can be expected in English? Yes, ma'am. So, ma'am, fortunately, there is a very good faculty at EduTap. Ma'am would name him, Mr. Narveer, sir, he is our English Narveer sir. faculty. Yes, Hmm. ma'am. So, इतना छोटा कोर्स है इंग्लिश का, और मेरे को बहुत छोटा ही चाहिए था अभी तक, जो भी आपको कॉन्वर्जेशन से समझ आया होगा। Right. सर का बहुत शॉर्टली बताते हैं कि प्रेसी राइटिंग आपको कैसे करनी है, कि व्हाट इज द डिमांड। Similarly, for the essay, I have an habit of writing an essay of 1,000 words, 1,000 to 1,500 words. Right. बट वहां पर ऐसे लिखना होता है 300 to 350 400 वर्ड्स का। सो अभी तक मेरा जो ऐसे का स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था इन यूपीएससी। बट Hmm. सर ने इतना इजी बताया कि व्हाट इज द डिमांड। तो इनफैक्ट इफ आई कुड रिपीट, सर ने बताया कि पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आप कॉजेज बताएंगे प्रॉब्लम के, प्रॉब्लम को Hmm. स्टेट करेंगे, फिर कॉजेज बताएंगे, फिर सॉल्यूशन बताएंगे, एक एक पैराग्राफ में हो रहा है ये सब, और फिर गवर्नमेंट स्कीम बता के कैसे कंक्लूड कर देंगे। सो इन पेपर वन जनरल इंग्लिश, तो एसेज, और एसेज के लिए सर का बहुत अच्छा वीडियो था। द वीडियो इटसेल्फ इज वेरी गुड। मैंने सर का वीडियो देख के तीन चार की पॉइंट्स बना लिए थे कि मेरे एसेज में क्या पार्ट होना चाहिए। And Hmm. as I said earlier, I had subscribed to the test series also, which is the part of that program. So I Hmm. used to write the test very seriously, religiously. I used to attend the test, and in fact, I used to, I used to mail you and the team when I used to get less marks. कि मेरे को इतना less marks क्यों आ रहा है? I Hmm. remember I mailed on Diwali day to Hmm. Ritika ma'am, please, I want to know why I'm getting so less marks in descriptive answer writing, though I'm doing everything good. Hmm. So somehow I guess I got very good marks in descriptive, because as I said earlier, my objective marks were very less. I could have Right. been out of the list. So my descriptive answer writing helped somewhere. In fact, the English also, I think I would have got good Hmm. marks. तभी So, इतना were marks you आया। satisfied with the feedback then? You said you mailed us. So, Hmm. did you had some satisfactory response? Yes, yes, ma'am. EduTap has been very satisfactory. Though, I was very much impressed by the EduTap. The prices also very impressive. इतना कम, बहुत ही ज़्यादा prices भी कम थे, क्योंकि हमारी इस यूपीएससी में प्राइजेस बहुत हाई हैं। सो एडुटैप की Hmm. फीस भी कम है, बहुत अच्छा पूरा हाउ यू कैन एनालाइज द थिंग, एंड द टीचर्स आल्सो दे अंडरस्टैंड देयर आर पीपल who can give lot of time, as well as there are people who won't be able to give lot of time, there are people who won't be able to revise. तो बहुत अलग अलग सेग्रीगेशन है हर चीज का। सो इंग्लिश में सर ने मेरे को बहुत हेल्प किया था।
Then there is a part on letter writing also. So letter writing के लिए there is a format which has to be followed, and this format varies across Hmm. the state PCS exam when you write the format in Hindi, as well as it varies here. तो अच्छी बात है कि जब आप EduTap जैसे बड़े किसी इंस्टीट्यूट से आप लेते हो तो फॉर्मेट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही फॉर्मेट लिख रहे होंगे। तो मैंने True. सर का फॉर्मेट लिया। फिर अगर पहला जो पैराग्राफ है, जो एक फॉर्मल Hmm. लैंग्वेज होती है, सर ने इतने अच्छे से बताया था कि आप डायरेक्ट आप उसको इनडायरेक्टली लिखेंगे चीजों को। इनफैक्ट दैट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ वेन एवर आई राइट फॉर्मल ईमेल्स ऑल्सो इन माई ऑर्गेनाइजेशन। तो Hmm. वो एग्जाम में हेल्प नहीं किया, इनफैक्ट लाइफ में भी हेल्प कर रहा है कि कैसे आप फर्स्ट फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखते हैं। तो सर ने ऐसे कुछ रूल्स बताए थे लेटर राइटिंग को लेके। Hmm. सिमिलरली प्रेसी राइटिंग को लेके कुछ रूल्स थे कि जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ वाइज जाना है। सो आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, इनफैक्ट आई डोंट रिमेम्बर देम ऑनेस्टली, बट सर ने जिस तरीके से बताया था, तो मैंने एक इंग्लिश के लिए अलग ऐसा डायरी बनाया था। Hmm. तो सर ने जो बताया था, देवर लाइक दी ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली हाउ आई हैव टू डू। सो इट हेल्प Hmm. मी। इंग्लिश में मेरे को लगता है इसलिए वहां भी मेरा अच्छा मार्क्स आया होगा, क्योंकि अदरवाइज आई वुड हैव नॉट मेड टू द इंटरव्यूज एंड द फाइनल लिस्ट। Right. Here's one very beautiful key takeaway that I want to share with all the aspirants. As sir said that for letter writing for PCS there's some other format, for other examination there's some other format. And when he came across EduTap material, then he understood that teacher is saying something different than the conventional way. But he followed that. So it is very important to understand that once you have fixed your source, that from here I am going to study, be it any channel, any coaching institute, or even the self study that you are doing, then you should stick to that. If you keep on confirming everything from one here and there, here and there, you are just going to get confused, and it is very important for all the aspirants to understand. And so if we talk about the type of questions, could you please share that what can be expected in English? Yes, ma'am. Ma'am, before that, you were asking about this kind of support that I received. So I forgot Hmm. about that sessions. Whenever we have doubt, so Hmm. we student used to get a session with Ritika ma'am. So Right. there was some, we used to we used to raise a ticket, and then there was an email where we used to give a slot time, and then Yes. Ritika ma'am would personally talk Address to all a the few of doubts. the. Hmm. So that was also a very good initiative, and that was also Hmm. really helpful, सेटिस्फाइंग। और जब कभी कभी डिमोटिवेशन होता है तो वो Hmm. मोटिवेटिंग भी रहता था काफी। Right. तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि मैम इंग्लिश में हम कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ, तो मैम देवर entirely based on the previous year question and the questions that were given in the test series with the EduTap. तो जो मैं एक्सपेक्ट करके गया था, तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग कि इस चीज में आएगा, बट जो मैं डोमेन हम्म। सोच के गया था कि इस डोमेन का ऐसे आएगा, इस हम्म। डोमेन में आएगा। तो प्राइमरली उसी में था। अभी कुछ मैं कोशिश बेसिक कर रहा हूँ याद नेशनल, करने का, कुछ ऐसे नेशनल अगर आपको बर्निंग याद है इश्यूज मैम। अगर हों तो, कोई नेशनल हम्म। बर्निंग इश्यूज हो, कुछ कुछ ऐसे इंटरनेशनल कुछ ऐसी चीजें चल रही हो, कंसर्न्स चल रहे हो, आई थिंक उसी के आसपास कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। यस मैम। मैम आई हम्म। वुड वांट यू टू टेल दी स्टूडेंट्स, आई नो यू नो मोर, क्योंकि मैं अभी एक्चुअली भूल चुका हूँ वो क्वेश्चंस क्या आए Yeah, थे, बट we can देवर। understand. And हाँ। because the student is on that much pressure and engaged with the answer, they can forget it that हम्म। time. Right. But हम्म। the basic general essence is whatever be, for example, banking sector से कोई question आ सकता है. For example, I'm just हम्म। giving a mere example कि जैसे financial inclusion related कुछ आ गया, climate related कुछ आ गया, women empowerment related कुछ आ गए. So ऐसे type के question जो इंडिया का एक burning issues है, they are the these kind of questions that are asked in examination. And now, sir, let's move to the interview part, which is the third phase of the examination. And we have aspirants waiting who want you to tell about your interview experience. So, sir, if we talk about the panel that was there, so sir, were they welcoming to you, or did you feel like that they were testing your endurance and they were grilling you? Yeah. So, ma'am, it was a video conference interview, VC interview था. It was not a Okay. physical interview. So, the panel there बहुत ही high ranking officials होते हैं. Hmm. Deputy Governor of the RBI was there in the panel. So there is a big screen in front of you and you enter the room. And first, it's a very short interview.
It lasts for only 12 to 14 minutes, not more than Okay. that. हाँ. And in fact, I was the first candidate that day. We were supposed to reach at 8:30. So Hmm. I reached at 8:20. Reporting time was 8:30, but my interview started at 8:25 itself. All जाते ही right. हो गया. They told me, okay, you are Akash. The person in front, Hmm. who was supposed to come has not come, so you go inside directly without DV and everything. Right. So, but before the final interview, I would like to talk about the interview preparation as well. Hmm. So there are mock sessions, mock interviews which were organized by EduTap and other institutes as well. So those were really helpful. उसके लिए अलग से मैंने एक नोटबुक फिर बनाया था इंटरव्यू के लिए, जिसको मैंने डिवाइड किया हुआ था क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Hmm. So I had divided my notes. This was my notebook there. So I had general studies, NABARD, then aptitude questions, and then biodata, like what are your strengths and weaknesses, इस Right. तरीके से. Hmm. So I made a diary और पूरे डायरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया था. So on the basis of the previous transcripts and experiences, so I knew focus area कहाँ होने वाला है. जैसे Hmm. there is this annual report of NABARD, which is the favorite. वो शायद सबसे पूछा जाता है. मेरा भी इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हुआ था. Hmm. तो आप उस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ते हो नंबर्स के साथ. इनफैक्ट आई न्यू दे वुड आस्क मी अबाउट द फ्रंट पेज ऑफ द NABARD मैगजीन जो एनुअल रिपोर्ट आती है. Hmm. एंड आई हैड लर्नड इट बाय हार्ट. जो उसका फ्रंट पेज था उन्होंने बहुत अच्छे से उसको 4 फेजेस में दिखाया था. दैट वाज माय फर्स्ट, ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. Hmm. सो तो पूरा वो भी. It's also important because you are appearing, you want to join that organization, so of course you can expect जो भी aspirants है उनको ये समझना है कि आपको उनके annual report बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. If you aspire to be there, you should be well aware of the current developments that are happening in that organization itself. सो माय बैकग्राउंड वाज ज्योग्राफी. सो Hmm. मेरे को पता था वाटरशेड से क्वेश्चन पूछेंगे. So Hmm. I had complete. In fact, these questions are also asked in the mock interviews. All right. तो मॉक इंटरव्यूज इसलिए भी हेल्पफुल होते हैं, आपको कंटेंट भी मिल जाता है. Hmm. फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं. इंटरव्यू में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था कि वी मेड अ ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट्स हु हैड क्वालिफाइड. Hmm. सो हम लोग रोज शाम को 1-1.5 घंटा वीडियो कॉल पे वी यूज टू डिस्कस द टॉपिक्स. उस ग्रुप में Hmm. से हम इनफैक्ट 6 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं जिसमें से 2 वेटिंग में है. हाँ, Right. so that That's, was really helpful. yeah. So FPOs and these were the burning topics. हम लोगों ने Hmm. first day it happened कि हमने जब वीडियो वो किया, we chalked out all the topics that are important, All right. which were important from the perspective of current and from the perspective of agriculture and rural development. So FPOs क्या होते हैं, cooperative banks क्या होते हैं, cooperative societies क्या होते हैं, कौन किसको रेगुलेट कर रहा है, तो इस टाइप के बहुत Hmm. डिटेल नोट्स बनाए थे हमने. और पैक्स क्या होते हैं, तो ये पूरा कंटेंट वाला पार्ट था. समहाउ आई एम लकी कि मेरा जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, विच इज वेरी गुड फॉर द इंटरव्यू. मैं बाकी यूपीएससी और स्टेट इंटरव्यूज में अपियर किया हूँ, तो आई गॉट गुड Hmm. मार्क्स देयर. Hmm. इनफैक्ट अपने इंस्टीट्यूट में आई वाज टेकिंग द इंटरव्यूज All ऑफ right. द यूपीएससी कैंडिडेट्स So ऑन you ऑन द knew अदर how to हैंड व्हेन face ऑफ देम. that. Hmm. हाँ, बट कंटेंट वाज मोर इम्पोर्टेंट. Secondly, I got this advice which I would like to give to everyone. Despite मेरा तो 9 साल का failures है, I have appeared at so many exams and failed. But आप लोगों का शायद कम होगा, but still you should not go there as a job seeker. Hmm. This was one of the feedback which I got there. You have such a good everything. So remember, you are not going there as a job seeker. आप एक ऐसा इंसान बन के जा रहे हो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू लेके आने वाला है. Hmm. It gave me a lot of confidence और मैं फिर इसी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया था. Right. So when we're talking about this, and as you have shared, you have 9 years of that wait to to serve the nation. Hmm. So I want to ask that how did you keep up with these Hmm. failures, and how did you Hmm. composed yourself till now, that perseverance? So how Hmm. did you manage that? देयर वर टाइम्स जब रिजल्ट्स आता है और आप बिल्कुल शैटर हो जाते हो, तो True. देन यू वुड कॉल योर फैमिली. सो वो तो मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ है अलग अलग Hmm. एग्जाम्स में. सो आई यूज्ड टू टेक ब्रेक फ्रॉम द प्रिपरेशन. All right. I went for doing my MA after 2 years of break. Hmm. So these breaks also help at times. Not only आपका डिमोटिवेशन और वो सब खत्म होता है, Hmm. बट आपको नई लर्निंग्स मिलती है और एक मेच्योरिटी आती है लाइफ में. तो
आप जिस स्टेज को अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, वो उस मैच्योरिटी से भी क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए आई परस्यूड हायर एजुकेशन ऑल्सो बीच में। फिर मैं पीएचडी में भी चला गया था आफ्टर क्लियरिंग जेआरएफ. So I used to look for these things. Moreover, when I was not getting in the final list, but I was able to go to the interviews. So your family confidence comes back in you. Right. So that happened for me somewhere after 2-3 years of not even clearing prelims. Then when you clear the when you go to the interview, when you are there in the interview, you are as good as the other candidates. So even your family members realize that okay, ये मेहनत तो कर रहा है पर इसका लक साथ नहीं होगा या इसका बाकी सब चीजों में प्रॉब्लम है, इसलिए ये Yeah. फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहा है. तो जब उनका फेथ और विश्वास आप में आ जाता है तो आपके पास एक ऐसी ऊर्जा आती है, एक इतनी पॉजिटिविटी आती है. Sure. इनफैक्ट इवन बिफोर दिस सिलेक्शन, जो ये 9 ईयर और मैं ये सब हार्ड वर्क बोल रहा हूँ, आई वॉज वेरी पॉजिटिव. तो वो शायद उससे आ जाता है. एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि देयर शुड बी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एज वेल. जैसे मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में फोकस कर रहा था, नाबार्ड वाज दैट ऑल्टरनेटिव फॉर मी. Right, because at least you should have something as a backup. You say as a backup, or you may then find other ways to pursue what you always wanted to do. So there are always other ways also. And yes, the things that stay connected to your family and friends, close friends, you may need not to talk with them every day, but these are the ones who are going to hold you when you are at your lowest. And one more important point that at least I have understood from what sir has said, that don't be harsh on yourself. If sometime you fail, no worries, take a break, make yourself calm, go back to that mental state of preparation again. You need not to be depressed, go in depression and quit or things, because as sir is a live example, it may take time, but if you are dedicated to yourself, if you have confidence in you, and yes, if the people around you, they have confidence in you, that is going definitely that you will end up to the place you deserve. So that is the thing. So Shreyansh is asking that, is in NABARD, was this your first attempt? Yes, ma'am. Yes, this was my first attempt at NABARD. Right. And Shreyanshi, I would also want to share that sir started after the notification. So if some of the students who are watching it after the notification is out, and in fact, most of you, if you have this notion that if you are not preparing 1 year or 2 year before examination, you cannot clear it. It's not like that, but it's just your strategy changes with the duration of examination. So his strategy he has shared in this particular video, and for others we are going to have a lot of sessions. Yes, So ma'am. yes sir, so at the end sir, till if there are more questions, we'll take it, but Hmm. till then sir, if you want to say something to the aspirants who are preparing for NABARD, so what tips or anything that you want to say to them? Yes, ma'am. Ma'am, on what lines particularly? Particular, maybe it can be a Hmm. motivation or Hmm. anything that you felt like during your Hmm. journey, Hmm. you felt something that Hmm. that was not that big deal, or Hmm. maybe some you expected that someone should have told you this during your journey. Hmm. Actually, talking about certain things which I can share with the people. So I have also met the other candidates. As I mentioned yesterday, we were together. Hmm. So there was this good friend of mine who was also in the interview group. He has also cracked it. So it was his second attempt. All right. So and he did not write other exams. He prepared for NABARD continuously. Okay. And his level of understanding things, Hmm. because I have a very superficial way, and my way of clearing it was I took it as an exam, but I Yeah. guess for him it was more of a a challenge, or you can say love, because NABARD is such a great institution. Right. And yes, I would like to say that you should watch the videos of the NABARD officers, which are available on YouTube. One is S. Tandon ma'am, and one is C. Hmm. Mohan sir. Their video is so inspiring. अगर आपको डाउट हो रहा है, कभी डिमोटिवेशन हो रहा है, उनका वीडियो देख के आपको नाबार्ड के लिए पढ़ने का बहुत मन करता है. इनफैक्ट यू वांट टू जॉइन द इंस्टीट्यूशन एज सून एज इट इज पॉसिबल. So this friend of mine, so he pursued his dream of joining the NABARD. Last year, he had given the prelims, cleared it. He could not make up to the interview round last year. उसने Okay. means बहुत अच्छे से लिखा था. 2 मार्क्स से उसका Hmm. इंटरव्यू रह गया था.
बट इस ईयर तो उसने बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया होगा। उसका आउट ऑफ 50, जहां मेरा 26 आ रहा था ऑब्जेक्टिव में, ही वाज गेटिंग अराउंड 38 मार्क्स। Okay. Similarly, I got a candidate. He was this guy. Himanshu is from NABARD only, जो NABARD के लिए prepare कर रहा था. The other friend Rahul, he is also in the list. वो भी काफी टाइम से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, 4 अटेम्प्ट यूपीएससी में दे चुके थे। और काफी लोग हैं जो उनको भी नबार्ड का इतना आइडिया नहीं था, जल्दी से प्रिपरेशन चालू किया। उनका स्ट्रैटेजी अलग होगा, आई एम नॉट श्योर, बट ही ऑल्सो वॉज एबल टू क्रैक द एग्जाम। उनका डिस्क्रिप्टिव अगर इतना अच्छा नहीं था तो ही वॉज वेरी गुड विद ऑब्जेक्टिव। ही गॉट 39 इन ऑब्जेक्टिव। सो एक अच्छी बात ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीक एरियाज देख सकते हो। तो जैसे True. आई वुड से माई स्ट्रेंथ इज इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यूज। माई वीकनेस इज वॉज ऑब्जेक्टिव। ARD. Yeah, ARD बेसिकली लाइव objective. स्टॉक का मैम, जैसे वो क्वेश्चन आया था ना, हे एक Yeah. है नए केज का साइज है ये वो। Yeah, that was from हाँ, poultry topic. और And yes, yeah, because in fact, this is for all that NABARD is increasing its difficulty level for ARD. If you compare previous year papers, ARD was very superficial, but for last year, from last year, they have upgraded that level, and this is a big learning for all of you. That ठीक है सर का थोड़ा बहुत नहीं मैम, उनका मेंस में मेरे को सेक्शन में हो बहुत गया। प्रॉब्लम हुआ, मैंने इतना अच्छा नहीं पढ़ा था। मेरे को बहुत Okay, याद आ रहा था कि आई विश आई कुड हैव डन दिस पार्ट अर्लियर, क्योंकि प्रीलिम्स में earlier. इजी क्वेश्चन था, लेकिन मेंस में एआरडी वाज एक्सट्रीमली टफ। Right. And in fact, for phase one, for his morning shift, the ARD यस section was मैम, very tough. So if you're यस मैम, preparing for NABARD, अभी ARD को आप उतना lightly नहीं ले सकते हो. यस मैम। Yeah. So yeah, so sir, आपसे inspire होके Pratik has already said कि if anyone interested in making group for targeting 2023 NABARD, sir has done peer study and it benefited all of them. So 7 out of 6, as you said, have are there and in merit list as well. So Yes, sir, thank you very much for joining with us, for sharing your views, your experience, and we wish you all the best, sir, for future. And I can't see more questions, so I think we should end the session. yes, ma'am. Sure, ma'am. Right, Thank you sir. so much. Thank you, sir.